श्री कच्छी दस्ता ओसवाड़ जैन कच्छ एकम द्वारा संस्थाना अध्यक्ष श्री महेशभाई लालका, उप प्रमुख अरविंद लोडाया तथा मंत्री लहेरचंद भाई खोनाना मार्गदर्शन हेठळ भूज मांडवी अबડાસા विस्तारना वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण थयेल समाजना तेजस्वी तारलाओनो सरस्वती सन्मान समारोह एकम भवन भूज मध्य योजायो हतो। कार्यक्रमનું અધ્યક્ષસ્થાન પ્રીતિબેન મોમાયાએ તથા અનિલાબેન વિક્રમસિંહ, પ્રબોધ મુનવર, દિલીપ મોતા, હરીશ લોડાયા, હીરાચંદ છેડા, કુણાલ ડાગા, જયાબેન મુનવર, જયુબેન શાહે શોભાવ્યું હતું। કચ્છ એકમ સંસ્થા વતી શ્રી પ્રબોધ મુનવરે સ્વાગત પ્રવચન કરી સૌને મીઠડો આવકાર આપતા કચ્છ એકમ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓની માહિતી આપી હતી તેમજ સમાજના તેજસ્વી તારલાઓની સિદ્ધિઓને બિરદાવી હતી। प्रीतिबेन मोमायाए समाजना तेजस्वी तारलाओने अभ्यासमां खूब ज आगळ वधवा पर भार मूक्यो हतो तेमज नाना बाळकोने मोबाइलथी दूर रहेवा सलाह आपी हती। कार्यक्रमनुं संचालन हीराचंद छेड़ा तथा तुषार जैने कर्युं हतुं। आभार दर्शन हरीश लोडायाए करेल। व्यवस्थामां अभय धरमसिंह, पंकज नागड़ा, दिलीप सायला, नीरव मोता, धवल छेड़ा तथा सर्वे कार्यकरोए सहकार आप्यो हतो। श्री कच्छी दस्ता ओसवाड़ जैन कच्छ एकम कच्छनी एक जूनी संस्था है और वर्षों कार्यरत है और आ संस्था द्वारा अनेकविध प्रवृत्तिओ कच्छ में थई रही है। खास कर अमरा समाजना कच्छी दस्ता ओसवाड़ समाजना ज्यां ज्यां परिवारों वसे एना माटे अनेकविध कार्यों आ संस्था द्वारा थई रह्या छे। त्यारे ताजेतरमां ज एकम भवन भूज मध्य भूज मांडवी और अबડાસા विस्तारना तेजस्वी तारलाओने सन्मानवानो एक कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। अमरा केडीओ जैन कच्छ एकमना अध्यक्ष श्री महेशभाई लालका, उपाध्यक्ष श्री अरविंदभाई लोडाया, मंत्री श्री लहेरचंद भाई खोनाना मार्गदर्शन हेठळ एकम भवन भूज मध्य महिला अग्रणी श्री प्रीतिबेन मोमायाना अध्यक्ष स्थाने आ समाजना तेजस्वी तारलाओने सन्मानित करवामां आव्या। एओने एक प्रोत्साहन पूरुं पाडवामां आव्युं। ज्ञातिनो दरेक युवक दरेक युवतीओ अभ्यासमां खूब ज आगळ वधे अने प्रगतिना शिखरो सर करे एवा हेतु साथे आ एक इनाम वितरण समारंभ साथे साथे सरस्वती सन्मानનું आयोजन एकम भवन मध्य કરવામાં આવ્યો ને અમારા સમાજના ભુજ માંડવી અને અબડાસાના જે તેજસ્વી તારલાઓ છે જે અભ્યાસમાં ખૂબ જ આગળ છે અને અભ્યાસમાં પણ શિક્ષણ ક્ષેત્રે મોખરાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એવા દરેક તેજસ્વી તારલાઓને આજે સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે અને શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી છે।